Now you're able to see his screen? No, sir. No problem. Okay, now you'll see. Now, check. Yes. Okay, fine. So let's start today's lecture. As today the topic is okay. So as we were discussing here, graphical transformations, isn't it? Any problem, doubts you want to discuss? Sir, I had sent few doubts on your number. 2 doubts. Okay. Let me see. 3 doubts, sir. 3 doubts are there. सर Yeah. Please. सर आप अभी डाउट्स लेंगे क्या? नहीं, अभी डाउट्स तो नहीं ले रहे हैं, अब मुझे तो पढ़ाना ही है, लेकिन अभी बोल रहे हैं वो डाउट है तो जरा देख रहे हैं क्या है, कहाँ क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है। सर मेरे भी कुछ भेजूं क्या अभी? टॉपिक क्या है? टॉपिक फंक्शन। एक क्वेश्चन। हेलो, भेजूं? नहीं अभी सर भेजूं क्या डाउट? फंक्शन का है। आप मीनवाइल डाउट सर फंक्शन का है। आप मीनवाइल डाउट, टॉपिक क्या है? फंक्शन में क्या टॉपिक है? अभी ग्राफ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना। सर वो मतलब टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑन टू इनटू वन वन मैनी वन उस टाइप का क्वेश्चन ऑड इवन। अच्छा, हाँ, ठीक है, भेज दीजिए आप। फिलहाल डाउट तुरंत भेजिए, जो भेजना है डाउट भेज दीजिए आप। हाँ सर, हाँ सर। डाउट में डिस्कस करता हूँ, डाउट तो उसे बताना ही पड़ेगा हमको, तो डाउट भेजिए एज सून एज पॉसिबल। हाँ, ये पूछ लीजिए। हेलो, क्या भाई सर ले रहे? ये बीके का नहीं, वो ईसर के बच्चे का है ना। तो ये जो आधे बच्चे हैं, ये जो, अच्छा, तो हमें ऐसा लिंक कोई नहीं मिला है, हमें तो BKW ये वाली मैडम ने। अच्छा, अभी भेजा है आपने। मैं लेट मी सी। मैम जो मीटिंग में कट कर दिया, मीटिंग में था वही बताया मैंने आपको। वही बोलो फोन कर दो। कोई लिंक दूसरी है भाई, और लोग देख लें। मैम आप करने क्या बोला? लिंक भेज देंगे मुझे भेजिए। पता नहीं क्या लिंक भेजिए, मैं दूसरा अभी इसको कट करता हूँ। ये लिंक नहीं है, तो स्टूडेंट्स कैसे जॉइन हुए? पता नहीं, आधे स्टूडेंट उधर है, आधे स्टूडेंट इधर है। कंफ्यूजन क्यों करते हैं ये लोग?
आपकी नेट चल ही नहीं रही। Yes, sir. Yes, sir. Are you getting my screen? हाँ sir. हाँ. Let's see. Right. Start. Okay. So too much disturbance with that. Oh, sharing the screen. Okay, fine. So let's see. So today's as the topic you see, that is a transformation of graph we were discussing, and some questions we were asking. Later on we will go through questions. First of all, let's go ahead with for transformation of the graphs. So, fine.
So during this transformation of the graphs, as we have discussed, the graph of modulus of absolute function means modulus of the function, absolute value of the function, and transformation of graph. What we were discussing hence. So today the topic is here. We can say. So let me give heading. Transformation. Although in some topic mod y equal to f of mod of x and y equal to f of mod x we have discussed. So some two more transformation of this modulus function we have to discuss here. So that's why I am recalling that previous one also besides transformation of. So that's why I am giving an entire heading, transformation of graphs by modulus function, you say. Transformation of graphs by modulus function. Modulus functions. Okay. Modulus transformation of graph by modulus function. So okay. This is our heading today. Transformation of graph by modulus function. Today's topic. That is number we can say. Here in this, let y equal to fx. So first we have to go that for y equal to, for any y equal to fx, that is y equal to f of mod x, which we have already studied, and then after y equal to mod of fx means all the possibilities of mod, and third situation it may be like this way, mod y equal to fx, right? And in the fourth situation, the situation is like this way, that mod y equal to, that we say mod of fx, mod of we say f of mod x, right? This one is the situation. So mod y equal to mod of f of mod x. So first and second we have studied, although I can recall this also, you can see. So drawing y equal to that we say mod of fx, what we see over here, that for mod fx, whether I want to recall, whether I have to recall this first and second, or directly I go to third and fourth, or just if you are interested, then I can recall this first and second also. Third and fourth. Third and fourth direct, no? Yeah. Third and Okay, fine. Third and fourth. Yeah. I will go directly on third and fourth graph. So you can point here. So third and fourth. Sir? Yes. Yes. So one thing I wanted to ask for, so for the second one, I got the steps that how to solve those type of questions, but why are we performing those steps? I didn't get. So that's what I'm saying here. If you are not got that, I can explain the steps also, why we are doing this. Which one? First one or second one? Second one, sir. The reason behind the steps. Mod of fx, as we are putting the mirror on this one, x-axis. So
the reason of this this is second, y equal to mod of fx. If you see here mod of fx, then if you redefine this mod of fx, mod means how you define the mod of fx. Let's see how you define this mod of fx. So mod of fx. Sorry, sir, I was talking about the first one. Sir, first one. First one, f of mod x. F of mod x. Yes. Before this, okay, fine. Before this, I have already given this one first and this one second, and then I made this as second. Okay. So this one y equal to, what is that? F of mod x. No? F of mod x. F of mod x. We have to go for f of mod x. Okay. So if you see over here, why we are going to for f of mod x, you can see that here. Just wait. Okay. Let me. थोड़ी प्रॉब्लम है ऑफिस में. So let me define f of mod x. First one, right? F of mod x. For f of mod x, you can see here that it is, we see f of x. F of x for every value of x is positive. For every value of x is greater than 0. Right? Greater or equal to 0, you can say also. And for f of, what we say here, minus x, for x is for every value of x when less than 0. Are you getting? So, Yes, the sir. graph of y equal to f of mod x is obtained. F of mod, how to find this graph? This graph will be obtained from the graph of fx as follows. So, first part, what we are doing here, we remove the left half graph of x positive. We remove the left half of the graph of x positive, right? So that it means when we were drawing this one, let's say this is x-axis and this be y-axis, and when we are drawing here f of mod x, then what we see over here, that let me draw the graph of f of mod x, that we recall like this way. Let's say this is y equal to fx. And let's say this is x and y axis. Yeah, you can see over here, this is x axis, and this is what we call y axis here. So while doing this one, y equal to fx, when we have to go for x is greater or equal to 0, then we have to consider this fx only. That it means we have to consider this fx only. For x greater or equal to 0, f of mod x is defined as this. Look at point here. Okay, sir. Are you getting this fx? And for x negative, Yes, sir. what do you have to say? F of minus x. Now you see how you draw the f of minus x. First, remove the left half of this one, x less than 0. First of all, what you have to do? You have to remove this left half of this part. This part you have to remove. I am not erasing properly, so that you can see that some part of the graph is left still, right? So I have to remove this part, erase this left side part, and then what we have to recall that then we take the mirror image of the right half of the graph for x greater or equal to 0 of the graph in the y-axis. In the y-axis, we have to take the mirror image. So what the pattern is here, we have to draw the pattern here also. The pattern here also, we have to draw like this way. Whatever the pattern of the graph is. It is same. Okay, sir. Clear? Are you getting now? Yes. Yes. How that I am doing like this way? This part, the image of this will be the same as it is. Right? Now since f of mod x is, this is what is even or odd function. So this is an even function. F of mod x, this will become even function. So the graph of f of mod x
would be symmetric about y-axis. It is all right, symmetric about the y-axis. Now see whether the final graph is Okay, sir. symmetric about y-axis. It's okay. Now the graph of f of mod x and fx, if you see, f of mod x and fx would be identical in the first and fourth quadrant. Although in the fourth quadrant, not it be. So in the fourth quadrant, nothing is there. So first and fourth quadrant, it would be same, right? So the graph of f of mod x and mod fx would be identical in first and fourth quadrant as x is greater or equal to 0, right? And here the part of fx lying on the left y-axis, if it exists, then it should be omitted. Are you getting? So you can note down this all also. So we can take the graph of, I have given the example of y equal to sine mod x. Do you remember? Y equal to sine mod x. So while doing this, we have to Yes, create that sine mod x. So you have to go for y-axis and x-axis as like this way, and you have to draw the sine x in the positive era only, positive portion only, positive side in the first and second quadrant, and in the left side what the graph is there, then we have to ignore this. So left side we have to ignore, and the same, and as it is sine mod x, this is even function, so the graph should be like this way only, right? So that is the mirror image you have to say. You have to take the mirror image हाँ with सर, respect to मैं समझ गया. y-axis. Okay, so now हाँ सर, clear? मैं समझ This गया. हाँ is y-axis and this what we call x-axis. So ऐसी graph है. You can hold some more graph over here. Just like, let me go ahead. If you want, I can take some more example over here. Let's take example. सर वो तो Pardon? लास्ट क्लास में हो ही गए थे सर. हाँ, ये सब हो गया था. X square minus 2 mod x minus 3 y equal to x square minus 2 mod x minus 3. अब इस ग्राफ को कैसे सॉल्व करोगे? फर्स्ट स्टेप में x square minus 2 x plus 3 minus 3 का ग्राफ ड्रॉ कर लो, और फिर f of mod x कर दो, because x square we can write mod x whole square, isn't it? So Yes, sir. in this Yes, way sir. you can solve. This is also an application that you can put the mirror on y-axis over here, and you can get the mirror image with respect to this y equal to line, isn't it? ऐसे ही solve करेंगे. Mod of ln x, mod of y equal to mod of ln of mod x, ऐसे ग्राफ भी solve किया गया था हम लोग, याद आ रहा है? हाँ सर. ये सब ग्राफ solve किए थे जहाँ तक हमें याद है. अगर आप बताइए तो फिर से मैं एक्सप्लेन करूँ इस सबको ग्राफ को, ठीक है? फिर नहीं आप सर. और नहीं कोई सर. प्रैक्टिस करनी है तो और कोई एग्जांपल दो, और कोई सर। क्वेश्चंस करो. हाँ, सर हमने y इक्वल टू ln mod x का किया था, पर mod ln mod x का शायद नहीं किया था. तो करवा दें इसको. तो सर कैसे करेंगे? फर्क क्या होगा दोनों में? तो हाँ, तो कैसे करेंगे? पहले ln x का ग्राफ आप ड्रॉ कर लोगे, फिर ln x के बाद क्या लिखोगे? ln x का मॉड ड्रॉ कर लोगे, नीचे वाली चीज को ऊपर बुला लोगे, ये सेकंड वाले सिचुएशन हाँ से सर. इससे, और फिर जो है ये लास्ट में हाँ फाइनली सर, फिर y फिर बहुत हाँ, मेरे में. फिर ln mod x पूरे की, फिर x की भी मॉड ले लोगी. दिस इज ऑलराइट. y एक्सिस पे मेरा इमेज लोगे. करके दिखलाएं इसको? हाँ सर, हो जाएगा. तो x नहीं एक्सिस सर, हो जाएगा सर. आपने दोनों अलग अलग कराए थे बस. हाँ हाँ हाँ, y एक्सिस ये ln mod x का ग्राफ ड्रॉ कर लो आप लोग. यहाँ पर ये y एक्सिस हो गई आपकी, और बना ही देते हैं. ये देखो, पहले ln x का ग्राफ ड्रॉ कर लो. अब ln x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग इस कलर से. ये ln x का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे हम लोग इससे. तो पहले ln x का सर ग्राफ ड्रॉ ब्रोकन कर W आएगा ना. हैं? बोल दे. ब्रोकन W आएगा ना. फिर से बोले. सर टूटा हुआ W सर ऐसे आएगा. हाँ W है लेकिन बीटा करेक्ट. यस. ये ln x का ग्राफ हुआ. हाँ ये सर, नीचे वाली चीज रहेगी ना, ऐसे ग्राफ ln x का आता है, तो ये वाली चीज तो फिलहाल आपकी ऊपर आ गई है. ये इस तरह से ऊपर आ गई है आपकी ग्राफ. सर. पेन घूम रही है जरा. हाँ बोलो. सर आप ड्रॉ कर रहे हैं या फिर सिर्फ बता रहे हैं?
मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ln x से ln mod x का, ये mod ln x आ गया, दिस वन इज अभी तक mod ln x हो चुका है आपका। अब इसके भी अंदर का सर जो स्क्रीन mod पॉज है। सर पॉज है, क्या स्क्रीन पॉज है सर। स्क्रीन पॉज्ड है? जैसे अभी जस्ट आपका ग्राफ आया, अभी आप जो भी ड्रॉ कर रहे थे ना वो सब दिख नहीं अच्छा रहा। हाँ, वो नेट का इशू आ रहा है, थोड़ा सा नेट तेज स्पीड रहेगी, या फिर अगर सभी लोगों का ऐसा हो रहा है तो यहाँ मेरा नेट का इशू होगा, और एक दो लोगों का हो रहा है तो आप लोगों के वहाँ नेट का इशू होगा। नहीं सर, जस्ट अभी ग्राफ दिखा, आप जब तक बता रहे थे तब तक नहीं आ रहा था, अब दिख गया। अच्छा अब दिख गया। अच्छा तो ये हो सकता है कि ये जो पेज में लिया हूँ ना, ज़्यादा लेंथ ले लिया हूँ, जैसे ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर वो पेज चेंज कर देंगे, पेज चेंज कर देंगे तो आप आने लगेगा, वो हैंग कर सर ये ग्राफ इसमें ही कर लीजिए। हैं क्या? सर ये वाला ग्राफ इसमें ही कर लीजिए। हाँ ये इसी में कर लेते हैं, टाइम वेस्ट होगा इधर करने में। तो फिर इधर ये देखो, ये -1,0 होगा और ये 1,0 पॉइंट होगा, ठीक है। इसका मिरर इमेज यहाँ पे आ जाएगा, ऑल्दो नेगेटिव रीजन में कोई ग्राफ है नहीं तो मिरर यहाँ रख लिया और फिर ग्राफ ये इधर रख लिया, ठीक है। ये ऐसे ग्राफ है, इसको भी लीव थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, ठीक है भाई, तो ऐसे ही रहेगा। तो ये फाइनली जो है ग्राफ ये और ये दोनों कंबाइनली दैट वी से ln ऑफ mod ऑफ ln x हो गया। दिस इज ऑल राइट, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। यस सर। हाँ सर। तो अब देखो ये मैं बता रहा था कि यहाँ पे अब हम लोग को mod y आज थर्ड और फोर्थ देखना है, mod y इक्वल टू fx और mod y इक्वल टू f ऑफ mod x। So let's go ahead and how to tackle this mod y इक्वल टू f ऑफ mod x। तो besides इसका ग्राफ के लिए आप लोग भी इसको वर्क करते रहेंगे और चीज़ों के लिए, जो नहीं आएगा उसको मैं देखता हूँ बाद में, और फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। अभी क्या करना है, y इक्वल टू, अच्छा एक और ये पॉइंट हो सकता है कि इसमें जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ y इक्वल टू एफ ऑफ, जैसे mod x इन्होंने पूछा, तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि f ऑफ माइनस mod x कैसे ड्रॉ किया जाएगा, बताओ जरा, सोचो। ये मान लो आ गया तो कैसे करोगे? सर सेम प्रोसेस, लेकिन वो लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड को होगा, राइट में मिरर करेंगे। राइट का गायब कर देंगे और लेफ्ट ये राइट वाला जो ग्राफ को गायब कर देंगे और लेफ्ट वाले का इमेज ले लेंगे। आर यू ऑल गेटिंग? तो साइन mod x में क्या कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, कॉस में नहीं पड़ेगा। हाँ, cos mod x में नहीं पड़ेगा, cos तो वैसे भी नहीं पड़ेगा, साइन mod x का ग्राफ चेंज होगा। जो इधर वाला जो आया हुआ है ना, ये साइन mod x जो आप मैं दिखला दूं, ये ऐसे है बनाया ना, तो ये ऐसे नहीं बनेगा। अभी साइन mod x कैसे बनेगा वो देखो ग्राफ, हाँ पहले हम लोग लेफ्ट साइड वाले को ग्राफ को लेंगे और ये पलट जाएगा, ये इस तरह से, ये आपका आ जाएगा साइन ऑफ माइनस mod x। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। तो हालांकि ये सब चीज़ें आप खुद पकड़ लें तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन फिर भी मैं जगह जगह पे पकड़ाता रहता हूँ ताकि आप देखते रहें, कुछ चीज़ मिस ना हो जाए आपसे, तो इसलिए ये सभी चीज़ बतानी पड़ती है। ये तो मैं इसको अलग से नहीं डिस्कस कर रहा हूँ ये डिस्कस करने की कोई चीज़ भी नहीं है, एफ ऑफ माइनस mod x, लेकिन फिर भी अगर आप बोले तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ उसको, ठीक है। नाउ स्टिल इट इज सर इसमें पॉजिटिव को गायब करना है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर हाँ बोलो। यस सर फोर्थ वाले में y से mod हटा के mod fx में प्लस माइनस लगा देंगे क्या? फोर्थ वाला देखो, एक बार थर्ड वाला लर्न कर लिया हम लोग ना, तो पूरे पर मॉड जो है नीचे से ऊपर लगा देंगे, यानी थर्ड वाले को पहले लर्न किया जाए, mod y इक्वल टू fx। फोर्थ वाला इजी है, फोर्थ वाला तो जो ऊपर सेकंड वाला है उसी के साथ mod y लगा लेंगे, पहले इस वाले को लर्न कर लें। एक बार ऐसा ग्राफ मिल जाए तो जो भी ग्राफ मिल जाए उसमें मॉड लगा देंगे, तो mod y इक्वल टू fx को लर्न कर लिया, ठीक है। तो mod y इक्वल टू fx में लर्न करने जा रहा हूँ, ठीक है मैं लर्न नहीं कर रहा हूँ, मैं लर्न करा रहा हूँ, ठीक है। एनीवे, तो mod y इक्वल टू fx, लेट्स लर्न mod y इक्वल टू fx। इस पर ध्यान से देखोगे, mod y इक्वल टू fx, ठीक है। इस पर जेई में क्वेश्चन बनाना पसंद करते हैं आईआईटी के यहाँ पे, ऑल्दो। तो लेट fx इक्वल टू, यू कैन से, इसको एक्सप्लेन भी करें कि मैं डायरेक्ट बता दूं ग्राफ से। एक तो ये तरीका जैसे डायरेक्ट बता दूं जो उसको आप फॉलो, एक्सप्लेन भी करूँ इसको।
जैसे उन्होंने बोला ना कि वो कैसे आया ये समझ में नहीं आया, तो इसको मैं एक्सप्लेन किया था, ऐसे एक्सप्लेन भी करें क्या? एक्सप्लेन करें? नहीं सर, अब डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। हाँ नहीं, वो लोग फिर बाद में पूछ सर लगते हैं तो एक्सप्लेन तो कर दीजिए, पर अभी हाँ। स्क्रीन थोड़ी पॉज है। अभी 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 ठीक है, अभी तो बस एक लाइन लिखा हूँ मैं, मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स, दिख रहा है बराबर? हाँ सर, अभी जस्ट हिला। हाँ सर। वही नेट का इशू आ रहा है, हमें लग रहा है। यहाँ तो दिख रहा है वही नेट बराबर है। लेट एक मिनट देखते हैं इधर से का इशू तो नहीं है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है।